Good evening to everyone present here, watching us live in Facebook and YouTube live. This is Rudranarayan Das. Take this privilege to warmly welcome you to this Netaji Memorial International Lecture Series, an initiative towards think times and rethink episteme. Distinguished participants, partakers, it's a glorious moment to extend my warm wishes on behalf of Center for ADIVASI Research and Development. At this international lecture is built with the intent of active and interactive learning and discussion organized by Center for ADIVASI Research and Development in collaboration with Ravenshaw University and NMILS Kolkata. On behalf of Center for ADIVASI Research and Development, I want to convey my heartfelt gratitude to our patrons, Professor Sanjay Kumar Naik, Honorable Vice Chancellor, Ravenshaw University, and Professor Nirmal Kanti Chakrabarti, Honorable Vice Chancellor, NUJS Kolkata. The convener of this largest virtual conference, eminent Indian historian, Professor Chandiprasad Nanda, and Professor Srinivasulu, NSC. Ladies and gentlemen, as you know that our center is a leading research-oriented institution promoting ethnographic, empirical, and evidence-based research for engaging and addressing the challenges that 21st century globe is facing today. The prime agenda of this institution is to come up with potential policy solutions for social change by believing in the idea of debate, dialogue, discussion, and with expertise, experiencing, and education. The institute focus on marginalized communities and work for their livelihood to protect their nature, culture, language, and identity in particular. The age of modernity has witnessed that change is the only constant phenomena for social purpose to enhance knowledge. Our information work for them is methodical and avoid paradoxically framework which is neglected so many centuries from theory to become practice. Our center sincerely believes in the concept of social marketing, which is seriously looking for non-profit marketing and builds new social entrepreneurship for check and balance mechanism to glorify generations to come. Our center come to serve with the holistic approach of critical thinking to fill the gaps and to plan accordingly for the voiceless community. It gives me tremendous contentment to the most esteemed personality of today's symposium is one of the finest historian of India, Aruna Sihna. Professor Sinha is a professor in history at the Faculty of Social Sciences, Banaras, Hindu University, Varanasi. Currently honored with the position of Professor Emeritus in the history by the internationally acknowledged Institute, Banaras, Hindu University. Professor Sinha has been serving this institution for last 39 years in capacity of renowned teacher, academician, and a dynamic administrator. She successfully completed 3 terms of head of the Department of History and Dean of the Faculty of Social Sciences on many occasions, and also appointed as the Chief University Employment, Information and Guidance Bureau. Dr. Sinha has a long research experience of almost 45 years now, and she has to her credit nationally and internationally acclaimed published book, research papers, articles, book reviews, and she has been convener director of quite a few path-breaking seminars at Banaras Hindu University and has made a place for herself in the website of the list of top academicians both within and outside India. Her name is in the panel of subject experts of the university's selection committees all over the India, and such other apex bodies like Indian Council of Historical Research, NCERT, UPSC, SCERT, State Public Service Commissions, and other departments of the Government of India as well. Briefly, for providing academic leadership, developing an effective learning environment for students as a member of many advisory committees, accrediting agencies, potential employers and students, satisfying or approving learning approaches, necessary resources, developing individualized instruction and multimedia presentations. So Dr. Sinha has honored with various awards like Bharat Jyoti Awards in 2012,
Bharat Gaurav Award in 2014, Bharat Excellence Award and Gold Medal in 2016, and many more. So in this occasion, to celebrating the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, this is a wonderful occasion celebrated by Center for Adivasi Research and Development in collaboration with Ravenshaw and NUJS. Ma'am, you are happy to know that we are concluding 4 lectures on the context of Netaji Subhash Chandra Bose to Indian freedom struggle, and presently what is the values of Netaji Subhash Chandra Bose and what is the impact on the present youth society, and how youths are influenced by Netaji's idea. So on this occasion, we welcome you to this lecture series. Your topic is as suggested by you. Is revisiting Netaji's contribution in Indian freedom struggle. So, ma'am, with this note, I would like to stop here and inviting you to start your talk. Over to you, ma'am. Dr. Sihna, please go ahead. Am I audible to you? Yes, ma'am, please. Okay. Thank you so much to the patron of the seminar, to the organizers, and to the audience, And thank you so much for giving me an opportunity to share my thoughts with you on Netaji Subhash Chandra Bose. Without wasting further time, I will just start right away, and with a brief background, of course, that conventionally, the story of the Indian independence movement is known to people in routine language, like its heroes firmly established, like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and a few others. And stories such as, the freedom struggle relied not on guns and bullets, but it relied on the inner voice from within, or the inner strength, or the passive resistance, or the peaceful methods, non-violent methods, and so on. So, of course, to some extent, this is quite true. And, then there is another law to it, and that is that it was exercised to such an extent that even the government, which was kind of trying to combat Gandhi and trying to combat non-cooperation movement and things like that, even that government was quite impressed by those methods, and in the long run, it came to admire it. Now, lately another legend has been added to this, and that is Mountbatten, that he appeared on the Indian scene, and in 1947, because of him, India got its independence, which was being delayed for such a long time. So all these kind of things are being popularized, in the conventional themes, conventional stories that are passed on in the name of national movement. Now, let me let you know that it was through the instrumentality of the Act of 1947, India Independence Act, that which actually, gave India independence, but in real terms, it undermined the independence of India in ways more covert and subtle than is routinely known. Perhaps, therefore, the India that emerged in the post-independence era was, in its nature and spirit, not the one that Bose had visualized when he assumed leadership of the Indian National Army as a military wing of the provincial government of Azad Hind, which he thought would come into force once the country is made independent. After all those sacrifices that he, along with his comrades, were ready to make.
Now, looking dispassionately at this point of time, it appears very important, to open the history textbooks to understand how it actually was. Now, on scrutiny of the facts, it appears that the story of the freedom movement was not as it was made out to appear. Further, one feels, a little uneasy to believe that it was that easy for a fair man like Gandhi or a Fabian socialist like Nehru or even a dashing young man like Mountbatten to bring about an India that emerged on 15th August 1947. Now, the story gets further complicated, rather romantic, you may say, when you see in it the involvement of many other people. And prominent amongst these people being a man, who respected Gandhi and yet who bitterly opposed him. A man who was considered or looked upon as a bitter rival of Jawaharlal Nehru, and still he was extremely well meaning to him. And above all, one who waged a war against one of the mightiest empires of the world in a most respectable style, by laying all the cards open on the table for one and the only objective, and that was most dear to his heart, the independence of his motherland from the British rule. Now, this was the story of the man known as Subhash Chandra Bose, one who was prepared to lead an alternative, violent, revolutionary struggle for his country's freedom, one that often paralleled the non-violent struggle launched by Gandhiji, and one that threatened to overwhelm it also. Bose is admired, adored, and loved, by his countrymen to such an extent that even today he's deified. You can find his photos hanging even in the most ordinary of the places like shops, common houses, calendars, and things like that. And it is the same picture, Bose in his military uniform, exhorting people of India for a glorious battle against the Raj, which he thought was the final answer to the British calumny that India could not fight. Now, here we all must remember that what kind of history writing Britishers have done, about the Indian character and especially about the Bengalis. So I think Subhash Chandra Bose was the real answer, was the right answer, was the straight answer to the British calumny, which always, said that Indians are no good and that India could never fight, it could not fight. Now, see Subhash Chandra Bose, about whom several beautiful books by eminent people, scholars, and many of them his own writings. His personality, these books have been published, Now, his personality has been enigmatic, charismatic personality in the whole string of figures who obtained a national status during the freedom movement of India under the British. One among such writers has been from the party of Bose's adversaries. We know the British, the main adversary of Bose, the British. His name is Hugh Toy, who was a British intelligence officer during the most critical phase of British rule in India and is himself the author of the famous book Subhash Chandra Bose, The Springing Tiger, which was published in 1959, in which he tries to assess the man's character and recounts the events of his life by writing a factual account of the Indian independence movement. And Philip Mason, who has written the foreword of this book, he observes about Bose that one must respect such a man as Subhash Chandra Bose, who resigned from the Indian civil services because he sincerely believed it his duty to India. That respect can hardly be extended to all who take sides in adversity and who a second time chose the more comfortable path. This is what Phillips Mason is saying about Subhash Chandra Bose. Again, he says that it would be wrong to imply that opportunism was the sole motive. For example, take the story of Mohan Singh, which provides an example of an officer who made his choice from a genuine conviction and he was prepared to suffer for his beliefs. And the personality, and here, there must be many more people like Mohan Singh,
But here, what Phillips Mason is trying to say is that the personality of Bose must have been an overwhelming factor with many. Again, he says that the Japanese, the next point that he's trying to make is that the Japanese overreached themselves and they were defeated in the long, stubborn battle for Imphal. But because General Slim's victorious army poured southwards through Burma, and the INA, its condition, look at the condition, it was disillusioned, defeated, starving, and in rags. It crawled to surrender by twos and by threes, by platoons and by battalions. The next point that he is making is that by international standards and military law, it should and it could have been court-martialed straight away. That is right, shot on the spot. But the British did not dare to do this. On the contrary, soon after the war with Japan, the Britishers felt compelled to tell about the INA to the Indian people, to the Indian public, and also to resolve the main issue, what to do with them. All were guilty of an offense that was legally punishable by death. But no, it was not that easy for the British. Do you know why? Because this was an army raised by a man like Subhash Chandra Bose. यानी अभी तक जिस सरकार ने इन्हें ट्रेटर्स घोषित किया हुआ था और इसलिए इसने जब सरेंडर भी कर दिया तब तो अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आईएनए के प्रिजनर्स को खत्म कर देने में। और कांग्रेस की लीडरशिप तो वैसे भी सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में नहीं थी और सुभाष चंद्र बोस के बहुत से संदेश भी भारत की जनता तक नहीं पहुंचने दिए जा रहे थे। तो अब तो भारतवासी भी गफलत में आ चुके थे कि एक्चुअली में है क्या सिचुएशन, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को डर किस बात का था। फिलिप्स मेसन बताते हैं कि ये वॉर जो थी इसको जीत लेने के बाद क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि विदिन अ फ्यू वीक्स द सिचुएशन चेंज्ड इन अ वे ऑफ नेशनलिस्ट इमोशन। द INA वर acclaimed heroes and they had fought for the freedom of India, it was believed. No political leader, now just give attention to these words of the Britishers, one of the British who's making this observation. No political leader who valued his future could stand aloof. All must offer to defend the martyrs. There was INA, Defense Fund, INA flag days. No evidence against the INA could be believed for a moment. And in the face of this storm of public feeling, at which Congress leaders were secretly as much disturbed or perturbed as were the British, the original policy was changed. इसके अलावा एक और बात देखिए कि आईएनए के जो प्रिजनर्स थे, जब उनको ट्रायल करने की बात आई तो अंग्रेजों की जो मौलिक योजना थी वो अनजान जगह पर उनको ट्रायल करने की थी ताकि पब्लिक अटेंशन से उसे दूर रखा जाए। जैसा कि आपने देखा कि वो भगत सिंह के समय किया गया था कि जिस दिन उनको फांसी देनी थी उससे एक दिन पहले उनको फांसी देके खत्म कर दिया गया ताकि पब्लिक का फ्यूरी और पब्लिक की जो रिवोल्ट है उसका सामना अंग्रेजों को ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पे बात ठीक उल्टी हो रही है। यहाँ पे जो उस समय के जो फील्ड मार्शल है ऑशनले, वो इतने श्योर हो गए कि भारत के लोग इस बात को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे अगर आईएनए के ट्रायल्स के साथ हमने ऐसा कुछ भी किया। इसलिए उन्होंने आईएनए ट्रायल्स को खुली जगह में जहां पब्लिक प्रेस भी पहुंच सके उसे करने की योजना बनाई और इसके लिए ऐसी जगह सोची जो भारतीयों के लिए बहुत गौरवपूर्ण थी और जिसने इस पूरे ट्रायल्स की अंग्रेजों ने शायद नीचा दिखाने के लिए रेड फोर्ट को चुना, लेकिन रेड फोर्ट में जो आईएनए के ट्रायल्स उन्होंने किए उससे क्या हुआ कि ये ट्रायल्स जो थे आईएनए के दे बिकेम सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं सुभाष के व्यक्तित्व का प्रभाव उस पूरी स्थिति में हमें नजर आता है। और इसलिए देखिए ह्यू टॉय जो है जिनकी मैंने बात शुरू की है ना, वो अपनी बुक को कंक्लूड करते समय इस बात को कहते हैं कि द आईएनए नॉट इन इट्स हैप्पी अनहैप्पी कैरियर ऑन द बैटलफील्ड
but in its thunderous disintegration, यानी बैटलफील्ड के कैरियर में नहीं बल्कि जब उनका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, that too thunderous disintegration, it hastened the end of British rule in India. है ना? देखिए ये जो भाषा है ये स्थिति को बहुत ही स्पष्ट करती है कि जिस समय उनके बैटलफील्ड में बुरे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिस समय वो पूरी तरह टूट रही थी, जिस तरह उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, वो जो थी उसने भारत में अंग्रेजी सत्ता को खत्म करने का काम किया. The agitation which surrounded the trials turned the issue of independence for India into an instant burning question once more, you know. और सुभाष चंद्र बोस के जो एक मित्र थे दिलीप कुमार रॉय, जिन्होंने किताब लिखी है सुभाष एज आई न्यू हिम, तो उसमें वो लिखते हैं कि हाउ सुभाष चंद्र बोस, he suddenly became such an amplified figure that he added to the romance of an Indian army, which was marching, which was singing to Delhi, and galvanized a frustrated nation out of its torpor and substantially damaged the insulation of the Indian army from the magnetic currents of popular enthusiasm for immediate independence. यानी अभी तक जो इंडियन आर्मी थी, जो कंपैरेटिव इंसुलेशन में चल रही थी, वो भी इस मैग्नेटिक इफेक्ट से और इस करंट से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उसका जो एक इंसुलेशन था, उसका जो एकांतवास था, वो भी टूट गया और वो खुद इससे चार्ज होने लगी, है ना? So much about how the British viewed his that is Subhash Chandra Bose's stature in the context of Indian freedom movement. Now, let's see a bit of what Subhash Chandra Bose's personality was like, because come to compare Subhash Chandra Bose's personality with, the other people of his time. For example, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, and many others of the same stock. And there are lots of books which are written, for example, Jawaharlal Nehru by Frank Morris. He writes a book about Jawaharlal Nehru and what kind of description he gives. Then Jawaharlal Nehru himself writes about his own autobiography, in which he writes many things about how he thinks, how he studies, what are his likes and dislikes, how he views the Indian national movement, and what kind of reactions he's, what kind of opinion he's holding towards the national leaders. But if you study the personality of Subhash Chandra Bose, then there is such a difference, that you notice in this person. Now, very briefly, let's say that he was born on 23rd January, obviously, in 1897 in Cuttack, in a well-to-do family, Kayastha family of Janakinath Bose, who was a very acclaimed, public-spirited lawyer, holding many other important positions as well. And Subhash was his sixth son out of the 14 brothers and sisters. And he was brought up in a healthy, disciplined atmosphere of home, where he learned industry, where he learned discipline. Before he was 5, then he was sent to Baptist Missionary School, and then at the age of 12, he was sent to Ravenshaw Collegiate School in order to prepare for the matriculation. And later he was sent to Presidency College, Calcutta, in 1912 to 1915. And then to Scottish Church College, Calcutta, 1917 to 19, to do his BA in philosophy, and then he was sent to University of Cambridge, 1919 to 1921, where he also appeared for the ICS exam. And within a short period of preparation of hardly 8 months, we see him emerging successful, obtaining 4th rank in that exam, which was a record in itself. Now, the most conspicuous features of Subhash's personality here was that he was a very reserved, serious boy, an avid reader, very introspective, in his mind, turning in upon himself in a precocious concern for the religious truth, self-control, psychic harmony, his attraction for yoga and mysticism, selfless service, that became his ideal. Now just imagine a boy. He's thinking about selfless service, and that too to the nation. And that becomes his ideal during his boyhood, when other boys are engaged in lots of other activities. He began to study philosophy,
at Presidency College, Calcutta, which only served to further intensify his inner struggle. Quite unusual, as compared to other of his contemporaries, as I told you earlier. Now, apart from the fact that he loved gardening and he was in love with nature, which he had imbibed from his very favorite teacher, Deni Madhav Das, his extreme sensitivity towards the suffering of others. These are all the traits of his personality that we ought to notice. His need for a guru who could resolve his inner conflicts, and in the course of which he finally comes to internalize the teachings of Swami Vivekananda, and he devotes himself to social service. He believed, and then further, that he believed that revolt was necessary for self-fulfillment. And this rebellious spirit, which was noted in his childhood, characterized his life and political career in later years. He was against all kinds of bondage and restrictions. And the very idea of subjection to a foreign country was sufficient to steel his determination to sacrifice everything for the independence of the motherland. And what distinguished Subhash's spiritual conquest from others was his extreme sense of asceticism, which he thought essential for purification of character and also for developing qualities of self-discipline, which alone he considered essential to be serviceable to people. Now, it was after reaching Calcutta that he realized, facing its atmosphere, that social service did not simply mean providing relief to the unfed, or to the maimed, or to the blind, but as well a new effort at national reconstruction on modern lines. And this he started through the sphere of education. Now, as we already know, Subhash grew up in an atmosphere of intense nationalism in Bengal, where people began to realize that only military power, potential or actual, could drive out the British. Now, the repeal of partition of Bengal brought in 1911 some relief to the people, but it did not bring any kind of reconciliation to British rule. So there were dreams of revolt and songs of freedom, which he must have heard during his boyhood. For half of the revolutionaries belonged to the rich and educated Kayastha caste from which he had been sprung. So while in Calcutta, political activism began to assert its hold on Subhash, and he was already a leader amongst the students. He wanted to promote quick thinking, self-reliance, because he told his friends that we Indians are too dependent on others. He was not talkative amongst his fellows, but in discussion, debate, or arguments, his speech was warm but urgent. Then there occurred an incident, which he called the first turning point of his life. And that was his expulsion from Presidency College for an incident, the root cause of which was racial prejudice by the British. It was in February 1916 that Bose refused to apologize for the incident, even though he was not directly involved in it, but he was asked and pressurized by the university staff to apologize for the incident, and he refused. And then the answer came in the form of Subhash's expulsion from Presidency College of Calcutta. Now, in his own eyes, he was the victim of racial prejudice, an injury which he could never forget for the rest of his life, And the incident, it kind of ate into his soul. It led him to think that he would create other disturbances, for them to remember, to show himself superior to the white-faced foreigner now became his one-pointed aim. And India must also show herself superior to the British. Now this got into his heart, and the incident ate into his soul. So to help and accomplish this became the mission of his life now. And in sequence of events, we find him, taking his first class honors in philosophy in 1919, and then leaving for Cambridge for further studies, and then
You see what he derives from the Cambridge, because he came from a well-off family and naturally he was, he had no problem to stay in a nice place in England. And therefore, see what he's writing from there to his friends and family is, what gives me the greatest joy is to watch the white skins covering me and cleaning my shoes. 1920, he passes the ICS exam with fourth position, and within a short time, in response to the nationalist urge, he becomes the first Indian to resign. So we find him in April 2021 saying that he will like to come back to India to serve his motherland, and if he failed here, he will never be able to respect himself. So, in opposition to his family opinion and family people and his father's, insistence, he returns to India in July 1921, and he goes straight to Gandhiji's residence to know from him the details of the non-cooperation movement. Now, naturally, given the constraints of time, I have to wind up the many incidences and the many details that are there as far as Bose's career is concerned. So I'm trying to, wind up to give you a few highlights. Now, beginning of his, now then, we move on to beginning of his political career in India and abroad. This political career can be, divided into two parts. One in India and the other one in Europe when he went abroad. Now, in India, between 1920 to 19, broadly 1940 or 41 USA, it was also in a life of disappointments partially, but not wholly. Now, events such as his meeting with Gandhi, his disillusionment there, then his appointment as he leaves Gandhi and then he's disillusioned. He goes to C.R. Das and he gets into his company and he feels more hopeful. And then he's made this youthful lieutenant is made the publicity in charge of the propaganda bureau of the Bengal Provincial Congress Committee. His because the Prince of Wales' impending visit was there in 1921, and therefore during the non-cooperation movement, the whole India was preparing to boycott this visit. So Subhash Chandra Bose, finding him a very enthusiastic person, he was given the chance to become in charge of publicity bureau, and there he works hard and he organizes the what do you call the protest of Indians against the visit of Prince of Wales. And then later on that it was a grand success, and then we get to know about his association with C.R. Das and journey to jail, and then his marvelous work as secretary of a relief committee there in 1921 in Calcutta, and then his duties for the newly founded Swaraj Party. In 1923, his appointment as secretary of the Bengal Provincial Congress Committee, and supposed to be the youngest secretary to be appointed, in the Congress, and then in the Calcutta Corporation Chief in 1924, and so on. I mean, finally, it culminates in his insistence on the Indian National Congress to pass the complete dependence resolution and starting a final battle against the British with no provision for a compromise. See, now obviously, therefore, he could not fit in the working style of the Indian National Congress, despite his best efforts during his presidency of the Indian National Congress twice, in 1938 and 1939, to make a space for himself on his terms and conditions. He was forced to quit the Congress and finally to leave the country in 1941, from where began the actual drama of Indian independence movement that finally made a difference to the cause of Indian independence, I would say. Now, see, normally we read in the books that it was Pandit Jawaharlal Nehru who, announced the goal, the goal of Purna Swaraj. He was the first person to announce that. But factually, it's absolutely wrong because Netaji Subhash Chandra Bose, right from the beginning, from 1924 onwards, he is insisting, twice in 1928-29,
And then again, the Congress turns down this proposal. And then again, during his presidency of Congress during 1939 to 1938 and 39, again, he faces the same problem in the Congress because Congress is not prepared for the goal of Purna Swaraj, which was Netaji's dream and which right since the beginning he was trying to impress upon the Indian people and the Indian leaders. And therefore, in 1921, when he met Gandhiji, and when he met a few other leaders, he makes an observation that I was quite surprised that here the people of India are quite prepared for launching a struggle, an all-out struggle against the British. But the Indian leaders are not ready for that struggle. So, in a nutshell, this is briefly the now Bose's activities in Europe in the 1930s. If you see, because in 1930s, he was sent to Europe for a he was incarcerated, he was put in the jail, and he was undergoing a very bad health, and therefore British government was kind of forced to release him. Then they said that we will not allow you to stay in India, and so Netaji Bose, Subhash Chandra Bose, went to Europe. Now there is his activities in the 1930s. We find that in Germany during uh, uh, his grand escape in 1941, his activities in Germany during the Second World War, in trying to organize an army for India's freedom and a great assault on the British with the help of Axis powers, that is Germany against Japan. His multifarious activities in these countries of Europe and South Asia, along with declaration of provisional government of Free India, which was given recognition by at least 9 countries of the world, including 3 big countries, Germany, Italy, and Japan. In this phase of his activities, we may note the following points which are of real relevance. That is, when Netaji, what kind of activities he is doing in Europe. Now, I'm just trying to summarize for you कि कैसे हुआ, उन्होंने क्या ऐसा काम किया जो हमारे नेशनल मूवमेंट के लिए बहुत ही फ्रूटफुल था और जिससे हमारे देश के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स जो थे न तो वो सोच पा रहे थे और न वो उसको कर रहे थे। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि 1930 में सुभाष बाबू यूरोप गए थे और वहां जाने का उनका जो प्रमुख उद्देश्य ये जानना था कि आखिर कैसे यूरोप के अनेकों देशों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन बड़ी शक्तियों से अपने देश को स्वतंत्र कराया। और वो ये बताते हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें युद्ध का इतिहास पढ़ने के लिए कहा, जिसको उन्होंने पढ़ा और इसके बाद उन्हें पढ़ के ये समझ में आया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ यूरोप के ऐसे देश थे जिन्होंने अपनी ताकत को समझते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए अपने देश को अपने दुश्मन से स्वतंत्र कराया, जिसमें कि वो एग्जाम्पल देते हैं जेकोस्लोवाकिया के लोगों का, the people from Czechoslovakia, Czechs and the Poles, पोलैंड के लोग, इन्होंने कैसे ब्रिटेन और फ्रांस की मदद से उनके दुश्मन ऑस्ट्रिया, हंगेरी, जर्मनी आदि को युद्ध में हराया था और इन्होंने अपनी स्वतंत्रता इनसे हासिल की थी। और कैसे इनके जो पोल्स थे, इनके जो चेक्स थे, जो उनकी आर्मी थी, दुश्मन की जो आर्मी में थे, उनको इन्होंने अब जो उनकी फौजों में कार्यरत थे उनको इन्होंने अपनी ओर मिलाकर वर्ल्ड वॉर के बाद और दुश्मन को अपने परास्त किया और इस तरह से उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराया। यही चीज आयरलैंड के केस में सुभाष चंद्र बोस ने देखी कि वहां कैसे सिंध पार्टी जो थी उसने 3000 की सेना के साथ एक बार कोशिश की थी, जिसको कि ईस्टर विद्रोह का नाम दिया गया, लेकिन उस विद्रोह में वो असफल रही। लेकिन उसके बाद दोबारा उसने कुछ साल के बाद फिर उसने जब अपने सैनिकों को जुटा के एक बार ब्रिटेन को अपने देश से निकालने का प्रयास किया तो उसमें वो सफल रही। तो वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्यों नहीं हो सका, बावजूद गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका कि 1921 में इस तरह के किसी भी आंदोलन से देश को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। राजनीतिक जागृति तो आ सकती है पर वो स्थितियां पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए काफी नहीं है। अतः वे यूरोप में रुके। 1933 से 35 के बीच में वो जानने का प्रयास लगातार ये करते रहे कि यूरोप की पॉलिटिक्स में, वहां की राजनीति में अगली घटना जो है वो कौन सी घटेगी। इस बीच में वो जर्मनी भी गए, वहां पे हिटलर ने बहुत ज्यादा कॉर्डियली उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको रिसीव नहीं किया और
वो ये जानने के लिए जानना चाहते थे कि ब्रिटेन के साथ जर्मनी आगे क्या करने वाला है, उन दोनों में लड़ाई कब होने वाली है। लेकिन उनको ये स्थिति बहुत क्लियर नहीं हुई, तो पुनः वो भारत आए। उसके बाद पुनः वो फिर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो वो भारत से पुनः एक बार यूरोप जाते हैं। और 1938 में जाके वो जब जर्मनी गए तो उनको ये समझ में आया पूरी सिचुएशन को स्टडी करके कि ब्रिटेन जो है वो जर्मनी के सामने पूरी तरह से कमजोर पड़ रहा है। और इन दोनों में लड़ाई होगी कि नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ब्रिटेन जो है वो इसके सामने कमजोर पड़ रहा है। और इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए 1939 के त्रिपुरी सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक पक्का कदम आगे बढ़ाने के लिए वे जोर डालने लगे। और ब्रिटिश सरकार कांग्रेस अभी भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में विश्वास करते हुए ये कहती रही कि भाई ब्रिटिश सरकार का हृदय परिवर्तन की आशा हमें है, और ब्रिटिश सरकार जो है वो उससे समझौता करके हमें स्वतंत्रता मिलेगी, हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहते। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इस बारे में बिल्कुल क्लियर थे, और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार जो है वो ब्रिटिश सरकार जो है वो समझौते की बात नहीं सुनेगी, ब्रिटिश सरकार अल्टीमेटम की बात सुनेगी। और इसलिए वे इस बात पे जोर डालने लगे कि अपने इतिहास के अध्ययन से जो उन्होंने सीखा है कि यदि ब्रिटेन कमजोर पड़ा तो भारत पर अपनी पकड़ को वो और ज्यादा मजबूत करेगा, छोड़ेगा नहीं उसे, और ज्यादा मजबूत करेगा। तो नेताजी ने अपनी समझ और रणनीति इतिहास से सीखी और बनाई। इस बार उन्होंने अमेरिका का भी अध्ययन किया, और उन्होंने ये भी देखा कि जब अमेरिका ने अपना इंडिपेंडेंस मूवमेंट किया था तो अमेरिका ने भी फ्रांस की मदद ली थी। तो उन्होंने कहा भारत जो वो सजेस्ट कर रहे हैं भारत के लिए, तो भारत कोई नई चीज नहीं करे। विश्व का हर देश जिसने अपनी स्वतंत्रता और उपनिवेशवाद से हासिल की है, उन सभी लोगों ने अपने जो दुश्मन है उनके दुश्मनों से मदद दी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि भारत के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिस अपॉर्चुनिटी का लाभ यूरोप के देशों ने उठाया और अपनी स्वतंत्रता हासिल की, लेकिन उसका फायदा जो है भारत नहीं उठा पाया। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारत को एक बात भारतीयों को बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि बिना विदेशी मदद के भारत की क्रांति कभी भी सफल नहीं हो सकेगी। तो उन्हें ये समझ में आ रहा था कि हम में से किसी को तो भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा विदेशी मदद से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। किसी और को इस कार्य के लिए तैयार न देखकर उन्होंने स्वयं ही भारत छोड़कर जाने की ठान ली। और इस तरह से उन्होंने छद्मवेश में, हम देखते हैं कि अनेकों कष्टों को झेलते हुए, जिसकी एक बहुत लंबी कहानी है, उसकी डिटेल्स में हम लोग नहीं जा सकते, अंततः रशिया का बॉर्डर क्रॉस करते हुए जर्मनी पहुंची गए 1941 के शुरुआत। और आप देखिए कि वहां पे क्या होता है, वहां भी एक लंबी इनकी एक्टिविटीज की एक लंबी लिस्ट है, बहुत सारी बातें हैं जो बताने की है, लेकिन अपने गिवन टाइम में शायद उन बातों को न बता पाए। कुछ महत्वपूर्ण चीजों, इंटरेस्टिंग चीजों को आपसे शेयर करते हैं कि वहां पे एक अंग्रेजी पत्रकार था जिसने बर्लिन के होटल से सुभाष बाबू से भेंट करके उसका विवरण इन शब्दों में दिया है। देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है कि बड़ी मुश्किलों से वो सुभाष बाबू तक मिलने पहुंच पाया, और उनसे मिलकर ऐसा लगता था जैसे कोई ग्रीक देवता जो है वो हिंदुस्तानी पोशाक पहनकर भूल से 20वीं सदी में आ गया। सुभाष चंद्र बोस हंसे, मुस्कुराए, और उन्होंने, वो कहता है कि उन्होंने मेरा स्वागत किया। उनकी हंसी इतनी मीठी थी, उनके द्वारा किया जा रहा स्वागत इतना निश्चल था कि मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं पाया था। मुझे ईर्ष्या होती है कि मैं एक हिंदुस्तानी क्यों न हुआ, बोस जैसे नेता पाकर मुझे सब कुछ मिल गया होता, है ना। अब ये जो मीटिंग थी और उस तरह की जो बाकी घटनाएं थी, वहाँ कराची में एक ओरिएंटल प्रेस था, उसने इस चीज को छापा था, और उसने सुभाष चंद्र बोस कैसे भारत से बाहर गए छद्मवेश में, और क्या क्या हुआ उससे भी रिलेटेड, और इस इंटरव्यू की बहुत सी डिटेल्स छापी थी जो बाद में अखबारों को मिली, और उन्होंने भी उन चीजों को पब्लिसाइज करने की कोशिश की। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कैसे जर्मनी में
कैसे उनका इंटरव्यू होता है। इसके अलावा जर्मनी में और भी बहुत सी वर्णन हमें मिलते हैं उनके बारे में कि कैसे उन्होंने जर्मनी में इंडियन लीजन की स्थापना की, आजाद हिंद सरकार का निर्माण किया, जिसे देखकर हिटलर अवाक रह गया और हिटलर स्वयं भी उसको देखने गया। और सुभाष चंद्र बोस के साथ बर्लिन से हैम्बर्ग के बीच में एक ड्रेस्टन नामक शहर था, जिसमें बोस के साथ न केवल उसका उन्होंने उनके द्वारा जो बनाई गई इंडियन लीजन थी उसका उन्होंने निरीक्षण किया, बल्कि 12 मिनट तक उसने उसमें भाषण भी दिया, उनके साथ सैल्यूट भी लिया। और उस भाषण में देखिए हिटलर जो है वो क्या कहता है, उसने कहा कि जर्मन सिपाहियों और स्वाधीन भारतीयों, मैं स्वतंत्र भारतीय सरकार के अस्थायी प्रधान हिज एक्सीलेंसी सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करता हूँ। वे यहाँ उन स्वाधीन भारतीयों का नेतृत्व करने आए हैं जो अपने देश को प्यार करते हैं व उनको स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। उन्हें सलाह या आज्ञा देना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि वे अब एक स्वाधीन सरकार के सैनिक। अब देखिए हिटलर के शब्दों को ध्यान से सुना जाए। वो कहता है, आप अपने जिन लोगों को एड्रेस कर रहा है, जिसमें जर्मन्स भी हैं और इंडियंस भी हैं, इंडिया के प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी हैं, वो कहता है आपके फ्यूरर पर यानी मुझ पर यानी हिटलर मात्र 8 करोड़ जर्मनों की हित चिंता का भार है, जबकि बोस ने तो 40 करोड़ भारतीयों की हित रक्षा की शपथ ली है। और अतः आप अपने फ्यूरर की भांति इस नई सरकार को और इसके प्रधान के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करें और इसका सहयोग करें, है ना। अब देखिए ये अपने में कोई बहुत मामूली अचीवमेंट नहीं है। उस समय की परिस्थितियों को देखें, भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही है इसको देखें, और जर्मनी में बावजूद हर प्रतिकूल परिस्थिति के सुभाष चंद्र बोस बिना किसी रिसोर्सेस के बिल्कुल अकेले कैसे परिस्थितियों को अपने फेवर में कर रहे हैं और कैसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक सॉलिड मदद पहुंचाने के लिए किस तरह से उन तैयारियों में लगे हैं, इस चीज का अंदाज हमें इन बातों से मिलता है। और हिटलर जैसी शख्सियत जो कि शायद सीधे मुंह बात भी न करती और बहुत समय उसने उन्हें इग्नोर भी किया, लेकिन जर्मनी में उनके बाकी फ्रेंड्स थे और उनकी अपनी पर्सनालिटी ऐसी थी कि उससे प्रभावित होकर हिटलर के द्वारा इस तरह की चीजें करी गई, जिनका विवरण हमें उस समय के बहुत से साहित्य में मिलता है। अब हमें देखिए ये भी वर्णन मिलता है कि कहाँ वहां के जो स्टार ट्रूपर्स थे उन्होंने हैम्बर्ग में कैसे नेताजी का सम्मान किया, कैसे उनको घेर के चारों तरफ से खड़े हुए, कैसे उनको दुश्मनों से बचाने के लिए किसी भी तरह की अनहोनी उनके साथ न हो पाए, इससे बचाने के लिए उन्होंने किस तरह उनको अपनी तैयारियां की, जिससे कि वे और किस तरह से उनके सम्मान में उन्होंने अपनी परेड की। यहाँ से हम देखते हैं कि जर्मनी में और बहुत कुछ नेताजी ने किया, जिसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन देने का समय नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ से फिर वो दक्षिण एशिया के लोगों के आग्रह पर वो पहले टोक्यो उसके बाद वो सिंगापुर जाते और वहां की जनता पर नेताजी का क्या जादू था, है ना। इस चीज को आप देखिए, पहले टोक्यो गए, उसके बाद वो सिंगापुर गए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का उन्होंने चार्ज एज्यूम किया राज बिहारी बोस से, और उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का वो किया, उसके बाद उसका जो हेडक्वार्टर्स था वो सिंगापुर बनाया, बाद में उसको रंगून शिफ्ट किया। तो नेताजी ने वहां की जनता पर, जब इनका जन्मदिन था, वहां पे लोगों पे क्या जादू था, वहां के भारतीयों पे क्या जादू था, वहां जो जापान ने जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे जिनको पकड़ा था ब्रिटेन से सिंगापुर जीतने के बाद जो सरेंडर हुए थे, उनका कैसे उनका समूह उनको इकट्ठा करके नेताजी ने किस तरह से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चलाने के लिए एक सॉलिड फोर्स खड़ी करते हैं। यानी उनकी पर्सनालिटी का क्या जादू था कि उनके जन्मदिन पे उनका लोगों ने तुलादान किया, जिसमें तरह तरह की इवेंट्स है, तरह तरह की डिटेल्स है, कैसे लोगों ने सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ चढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन एक जापानीज महिला का विवरण हम बताते हैं, उसने बड़े आश्चर्य से बात कही कि हिंदुस्तान में ऐसा भी होता है क्या, हिंदुस्तानी ऐसा भी करते हैं। आश्चर्य का देश है भारत। हमारे सम्राट का जब तुलादान होता है तो सारी संपत्ति राजकोष में चली जाती है, जो उन्हें चढ़ाई जाती है तो राजकोष में चली जाती है। तो कोई उन्हें जो ऑडियंस है वो जवाब देता है कि हाँ, भारत में ऐसा ही होता रहा है।
तब वो जापानी महिला जो है वो बोली कि मैंने इतिहास में पढ़ा था, देखो वो कौन सा राजकुमार था जो अतुल संपत्ति युवती पत्नी को ठुकराकर मानवता के कल्याण के लिए चल पड़ा था, देखो उसका नाम। फिर वो याद करती है, हाँ, गौतम बुद्ध। उसने आदर से सर झुकाकर कहा, भारत की परंपरा तो ऐसी ही रही। ये थे सुभाष चंद्र बोस, उनका तुलाधार और उस जापानीज लेडी का ऑब्जर्वेशन जो वो समय देती है सुभाष चंद्र बोस, और उसको देखते हुए भारत के बारे में वो पूछती है कि धन संपदा जो इकट्ठी की जा रही है इसका क्या होगा। इसका जवाब देते हैं कि इसका एक एक पाई जो है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भेंट की जाएगी, उसके लिए भेंट की जाएगी, भारत को स्वतंत्र कराने में इसका उपयोग किया जाएगा। अब इसके बाद नेताजी ने आजाद हिंद बैंक की स्थापना की और 1944 में रंगून में इसका मुख्य केंद्र, उन्होंने रंगून को इसका मुख्य केंद्र बनाया। बाद में आईएनए हेडक्वार्टर्स को भी रंगून में शिफ्ट किया था उन्होंने, और उनका इरादा था कि इम्फाल जैसे ही हाथ में आएगा, है ना, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी उनकी अपनी आजाद हिंद की, वो उसकी तरफ से वे नई करेंसी एक शुरू करेंगे। और जनता ने उनके इन बातों का और उनके आजाद हिंद बैंक इत्यादि की बातों का इतना स्वागत किया था कि 3 स्थानों पर तो उसकी शाखाएं तुरंत खोल दी गई थी और 5 स्थानों पर और खोले जाने की मांग उठ गई थी। तो 19 में 1945 को रंगून के पतन के बाद, ये एक मेन उसमें नहीं है लेकिन आपको बताएं कि जब 19 में 1945 में अंग्रेजों ने रंगून पर अपना अधिकार जमा लिया, जनरल स्लिम की जो सेनाएं थी वो साउथ वर्ड से बर्मा की ओर आने लगी। यद्यपि उन्होंने वहां के लोगों को ये प्रॉमिस किया, आईएनए के लोगों को ये प्रॉमिस किया कि हम किसी भी चीज को आपकी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपका जो बैंक है उसकी जो धन संपदा है उसको हम छुएंगे भी नहीं। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, उन्होंने अपनी उस सारी बातें भुला दी और तुरंत उन्होंने रंगून हाथ में आते ही उस पूरी आजाद हिंद बैंक का जो खजाना था उस पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। और इस तरह की न जाने कितनी असंख्य घटनाएं हैं जिनमें हमें नेताजी के प्रति लोगों का भाव दिखता है और नेताजी की डिसिप्लिन के प्रति उनका सम्मान और समर्पण दिखता है। सुदूर पूर्व में उनका स्वागत जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने किया था और अपनी जापान की संसद में उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जापान इज फर्मली रिजॉल्व टू एक्सटेंड all means in order to help to expel and eliminate from India the Anglo-Saxon influences which are enemy of Indian people and enable India to achieve full independence in the true sense of the term. जून 16, 1942 को उन्होंने ये भाषण दिया था। और देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारत के लोगों से क्या अपील कर रहे हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अपने प्रसारण जो थे वो शुरू से भारत के लोगों को दे रहे थे और जो जो वो काम यूरोप में जाके और साउथ एशिया में कर रहे थे उसके बारे में लगातार वो भारत के लोगों को अपना प्रसारण देते चले जा रहे थे। तो प्रसारण से वो उनका मनोबल और उनकी हिम्मत हौसला अफजाई करना चाह रहे थे। ये दूसरी बात है कि उनमें से बहुत से प्रसारण जो थे वो लोगों तक शायद नहीं पहुंच रहे थे लेकिन कुछ पहुंच भी रहे थे। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारत के लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिन्हें, क्योंकि इस समय कांग्रेस जो थी और भारत में बहुत से ऐसे इस तरह की बातें फैलाई जा रही थी कि सुभाष चंद्र बोस जो है एक्सेस पावर से मिल गए हैं और उन्होंने उन लोगों से मिलकर भारत में एक दूसरे साम्राज्यवाद की तैयारी कर ली है और इसलिए उन लोगों का साथ जो है वो भारत के लोगों को बिल्कुल नहीं देना है। इस तरह की अफवाहें जो कि लोग फैला रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ से कहते हैं कि जो लोग those who doubt the merit of the Axis powers, वो कह रहे हैं कि if India did not trust the Axis powers, let it trust me at least. यानी let it trust him himself, Subhash Chandra Bose. If the wily, cunning, and resourceful British politicians have failed to cajole and corrupt me, nobody else can do so. Let there be no more thought of compromise with Britain. इसका मतलब क्या हुआ? ये इंग्लैंड में थे, बहुत लोगों ने इन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज जैसे कनिंग लोग और उनके जैसे मतलब भ्रष्ट बनाने की ताकत रखने वाले पॉलिटिशियंस जब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो मेरा अब और कोई क्या बिगाड़ देगा।
तो वो कह रहे हैं इसलिए ब्रिटेन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। और वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन के लिए इट वाज इकोनॉमिकली एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल फॉर हर टू गिव अप इंडिया एंड इट इज मैडनेस ऑन द पार्ट ऑफ इंडियंस टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ब्रिटेन टू गिव अप इंडिया। अब इसके आगे वो देखिए क्या कहते हैं, इंडियन लिबर्टी मस्ट हाउएवर बी वन विद इंडियन ब्लड, only so would Indian strength suffice to preserve it। अब इसका मतलब क्या है कि ये बातें कि भारत में हम समझौता कर लेंगे, मतलब आजादी आपको तब मिलेगी जब आप स्वयं उसके लिए लड़ने को तैयार है, उसकी कीमत चुकाने को तैयार है, अपना खून बहाने को तैयार है, तब आपको आजादी मिलेगी। और वो आजादी उस ढंग से अगर आप लेंगे तभी उस आजादी की आप इज्जत कर पाएंगे। अब देखिए ह्यू टॉय जो है जिनसे बात शुरू की थी, वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, उनका कहना है दिस वाज इंडीड अ न्यू वॉइस ऑफ एशिया and the purposes of his escape from India had now been fulfilled. He knew the international situation at first hand. The Axis, particularly Japan, was ready to help India. All Indians in Axis controlled countries were organized as one to bring assistance to those at home. और बोस ने क्या कहा, Now let India do her part. हमने अपना पार्ट किया, एक्सेस पावर्स तैयार है, एक्सेस पावर्स के कंट्रोल में जो भारतीय हैं उनसे हमने एक फौज को तैयार कर लिया है, अब इंडिया हैज टू प्ले हर रोल। और अब वो क्या कहते हैं अपने प्रसारण में, अंग्रेजी में जो उनके प्रसारण होते हैं उसमें वो कहते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मस्ट डेवलप इनटू आर्म्ड स्ट्रगल and only when the Indian people receive the baptism of fire on a large scale will they qualify for their freedom. India shall be free before long, and a free India would throw open the prison gates so that her worthy sons may step joy and self-fulfillment. आप ये देखिए कि भारत के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के नेता रहे, कितने हैं उन्होंने जिन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। और सुभाष चंद्र बोस क्योंकि खुद उस जंगल के उस जेल के अंधेरे में रह के इतने वर्ष उन्होंने काटे, इतनी मुसीबतें झेली और उन्होंने समझौता नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में उनको इस बात का अंदाज है कि जेल से जब एक कैदी छूटता है तो वो जब खुली हवा में आता है तो उस फ्रीडम का, उस स्वतंत्रता का क्या खुशी होती है, उसकी क्या सेल्फ फुलफिलमेंट की फीलिंग मिलती है। तो वो अपने प्रसारण में इस बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं और फिर वो लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, उनको याद दिलाते हैं, we have a grim fight ahead of us, for the enemy is powerful, unscrupulous and ruthless. In this final march to freedom, you will have to face hunger, thirst, privation, forced marches and death. Only when you pass this test will freedom be yours. अब देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने की 1947 के बाद अपने फैमिली में और बहुत से बुजुर्ग लोगों से हमने ये सुना कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इस बात को कहते थे कि स्वतंत्रता को यदि आप आसानी से ले लेंगे तो आप उसकी कदर नहीं करेंगे, और यदि आप स्वतंत्रता को कीमत देके लेंगे तो आप उसको बचा पाएंगे, और जिस दुश्मन को आप बाहर कर रहे हैं वो दुश्मन भविष्य में आपको पुनः अपने अंडर में न कर दे, इसका रास्ता भी आप सीख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे वो लोगों को जुटा रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हम आपको प्रमोशन देंगे, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको बहुत ऊंची पदवियां देंगे, बल्कि ठीक इसकी उल्टी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको अपने इस मार्च में क्या करना पड़ेगा, भूख, प्यास, तकलीफों का जबरदस्ती लड़ाई करने के लिए जाना, स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जब आप इस टेस्ट को पास करेंगे तभी आप स्वतंत्रता आपको मिलेगी। Only then when you pass this test, freedom will be yours। अब इस उनकी बात को सुन के आप ये देखिए कि
people were dazzled. They were flattered, To each he was the authentic leader, long awaited, who would remove all doubts, answer all questions. अब एक उनके पर्सनालिटी में लोग जो थे वो देखने लगे कि भाई यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे सकता है और खून बहाने के लिए कह भी रहा है तो डेफिनेटली वो निहायत ईमानदार और एक बहुत ही ओपन कमिटमेंट के भाव से इस बात को कर रहा है। तो अब सुभाष चंद्र बोस ने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद थी उनके जो 4 लेटेस्ट में उन्होंने शपथ की है, जरा उनके शब्दों पे भी ध्यान दिया जाए। वो कहते हैं, इन द नेम ऑफ गॉड आई टेक द सीक्रेट ओथ दैट टू लिबरेट इंडिया एंड द 38 crores of my countrymen, I, Subhash Chandra Bose, will continue the sacred war of freedom till the last breath of my life. यहाँ पे एक छोटा सा अगर हम उसे 1947 के बाद की राजनीतिक स्थिति से देश की परिस्थितियों को, देश की राजनीति को कंपेयर करें तो हमें इन शब्दों का, उनके व्यक्तित्व का, उनके विचारों के महत्व जो है उसे समझने में शायद 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो वो कह रहे हैं, आई सुभाष चंद्र बोस will continue the sacred war of freedom till the last breath of my life. I shall remain always a servant of India and to look after the welfare of 38 crores of Indian brothers and sisters. That shall be my highest duty. Even after winning freedom, I will always be prepared to shed even the last drop of my blood for the preservation of India's freedom. ये उनके शब्द थे। अब उनके जो बाकी कैबिनेट के मेंबर्स थे वो भी एक के बाद एक आते गए और शपथ को रिपीट करते गए, इसी शपथ को रिपीट करते गए और हम देखते हैं कि कुछ ही हफ्तों में ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी इसको कम से कम विश्व की 9 देशों ने अपना रिकग्निशन दिया, जिसमें 3 सुपर पावर्स थी, जिसमें जापान था, इटली था, जर्मनी था और बाकी कई देश थे, बर्मा था, क्रोएशिया था, फिलीपाइंस था, नाइजीरिया था, मंचूकुको था और सियाम वगैरह थे और फ्रांस जिसे उन्हें हुई थी, लेकिन उसने अंत तक उनको रिकग्निशन नहीं दिया, है ना। और सुभाष चंद्र बोस ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया कि ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की प्रोविंशियल आजाद गवर्नमेंट बन गई है, आजाद हिंद की सरकार बन गई है, लेकिन बनना एक बात होती है, उसको लेजिटिमेसी देना अलग बात होती है। लेजिटिमेसी उन्हें कब मिली? जब जापान ने, क्योंकि जापान जो था सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी से, उनके विचारों से, उनके कृतित्व से इतना अधिक प्रभावित था कि जापान ने जब अंडमान निकोबार पे अपनी विजय की तो उस पर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को उसका अधिकार उनको दिया और वहां पे सुभाष चंद्र बोस ने विजिट किया और वहां जाके उन्होंने सिल्वर जेल को देखा और वहां उन्होंने वो जो 2 आइलैंड्स थे उनका नाम शहीद और स्वराज आइलैंड रखा और इसी प्रकार से उन्होंने इस तरह से अपनी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसको लेजिटिमेसी भी उनको मिलती है, उसको प्राप्त होती है और उस भाव से वे ये कहते हैं लोगों से कि the provincial government is entitled to and hereby claims the allegiance of every Indian, यानी हर भारतीय का स्वामी भक्ति जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद को मिलनी चाहिए, उसका ये अधिकार बनता है। और वो कह रहे हैं कि it guarantees religious liberty as well as equal rights and equal opportunities to all its citizens. वो अपने सारे लोगों को भारत के रिलीजियस लिबर्टी का अधिकार देगी, सबको इक्वल राइट्स देगी और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगी अपने सारे नागरिकों को, ये वो प्रॉमिस करते हैं। काश 1947 के बाद हमारे देश की सरकारों ने इस चीज को ध्यान में रखा हो और जब हमारा वो बन रहा था आपका संविधान, तो इन कुछ चीजों को अगर ध्यान में रखा जाता तो शायद बहुत सी प्रॉब्लम से भारत जो था वो बच जाता, है ना। अब हमारा निष्कर्ष ये है कि बोस की कहानी को यदि हमें समझना है तो इसके लिए एक तो हमें थॉमस बेबिंगटन मैकॉले और एक हमें एलेन ऑक्टेव ह्यूम की बात को भी जानना पड़ेगा। ये दूसरी बात है कि सुभाष चंद्र बोस से इन लोगों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन
सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व, विचार और चरित्र वाले व्यक्ति के साथ जो कुछ भी घटा बाद में, और उनके भारत के अंदर जो उनके साथ घटा और बाद में उनके साथ जो घटा 1947 के बाद, उसको यदि समझना है तो ये आवश्यक होगा कि देखें कि कैसे मैकॉले ने उसको प्रभावित किया और कैसे ह्यूम ने उसको प्रभावित किया। जहां तक मैकॉले की बात है, उन्होंने जो एक चीज सोची थी कि अगर हम भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करें तो भारतीयों की बुद्धि और संस्कार दोनों को ही दूषित कर देंगे, क्योंकि अपनी बुद्धि और संस्कार के ही कारण भारतीय जो है इन्होंने भारत में अंग्रेजों के नाक में दम कर रखी है। अगर इन दोनों को दूषित कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो उन्होंने एक नया शिक्षा का संस्था का ढांचा तैयार किया और इस प्रकार से उसका प्रभाव जो है वो हम भारत में भविष्य में आने वाली पीढ़ियों पर देखते हैं। ये एक अलग विषय है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के साथ जो घटा उसको समझने के लिए रेलेवेंट है। इसकी बहुत डिटेल में ना जाए। एलन ऑक्टिव ह्यूम जो थे, इन्होंने 1857 में जो अनुभव इनके साथ घटा था उसमें उन्होंने देखा था कि जनता की शक्ति जो है वो कितनी भयानक है और ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि जनता की शक्ति को खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने ये प्लान किया कि हम शिक्षित भारतीयों को जनता की शक्ति से दूर करेंगे। पहली बात, जनता यानी जनता को शिक्षित भारतीयों का नेतृत्व न मिल पाए। दूसरी बात, देशभक्ति के साथ राजभक्ति का अद्भुत मिश्रण करें। इसका एक प्रयोग उन्होंने 1885 में इंटरनेशनल कांग्रेस की जो नींव रखी थी उसमें उन्होंने किया था, और ये एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग था जिससे पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति में रंजित जो लोग थे, जो सरकारी कृपा पर निर्भर हो गए, शिक्षित भारतीय अपना मूल भूलकर प्रार्थना पत्रों एवं पर्चों से ब्रिटिश राज्य को हिला पाने की कोशिश करने लगे, जो कि वो कभी नहीं कर पाए, है ना। और उसके अलावा वे कुछ सोचने लायक बचे। बाद में इसमें जो एक फेज आता है जिसमें हम गर्मपंथी राजनीति का वो देखते हैं, तो ये कहा, बहुत से लोग ये कहते हैं साहब एलन ऑक्टिव ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को जन्म दिया था, लेकिन वास्तव में ये बात उल्टी है कि उन्होंने भारत में राष्ट्रीयता को जन्म दिया। लेकिन इस तरह की वाहियात बातें जो है ये बिल्कुल उल्टी है तथ्य, क्योंकि वास्तव में जो भारत में राष्ट्रवाद का जो एक फेज चला है उसने राष्ट्रीय कांग्रेस को उस राष्ट्रीयता की तरफ प्रेरित किया है, आगे बढ़ाया है, जिसका एक प्रभाव हम ब्रिटेन के उस पर बाद में देखते हैं। और राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसमें दबदार कुछ लोग आते हैं, गांधी जी से इसकी शुरुआत होती है, महाराज तिलक से होती है, और क्रांतिकारी जो थे वो देश के बाहर पहले ही चले जाते हैं। तो ह्यूम ने इस राजनीतिक संकट को जो रचने की प्रेरणा पाई, जिसका अभिप्राय था जनशक्ति को पढ़े लिखे समाज से अलग करके उसे शिक्षित लोगों के नेतृत्व से वंचित कर दे। तो इस पूरी चीज को समझने के लिए हमको एक लंबी डिटेल में जाना पड़ेगा, उसकी डिटेल में हम ना जाए। तो सुभाष के पहले का भारत, सुभाष के समय का भारत, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की राजनीति के रूप में देखते हैं, और उसके बाद 1945 के बाद भारत, जब ये मान लिया गया कि अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई और अब वे इस दुनिया में नहीं रहे, तो 15 अगस्त 1947 को नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया, और उसको भी, और उसके बाद 1940 के बाद 45 के बाद भारत में क्या घट रहा है, सत्ता हस्तांतरण कैसे किया गया, जवाहरलाल नेहरू के काल में कैसी घटनाएं घटती है, ये सारी बातें जो है इनसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नेताजी क्या थे और लीडरशिप किसे कहा जाता है, व्हाट इट मीन्स टू बी लीडर, हु इज ए लीडर। यहाँ पे हम आपको दो बातें बता दें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसकी फ्रीडम का जो डिस्कोर्स है वो पूरा का पूरा डिस्कोर्स जो है वो ब्रिटिश क्राउन में रूटेड है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो फ्रीडम का डिस्कोर्स है वो किस चीज में रूटेड है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन। तो ये दोनों ही पोल्स अपार्ट है, दोनों ही दो अलग पोल्स जो है हमें दिख रहे हैं। और 1947 के बाद भारत के बारे में बताने का एक क्लोजर ये भी है कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या हुआ, इसके इसलिए बहुत कभी लोग जानते हैं। 1947 में ब्रिटिश सरकार चली गई, लेकिन भारत ने अपने एजेंट्स को छोड़ गई थी, और विभाग के लिए जिसे 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस अधिनियम के माध्यम से उन्होंने भारत हुआ था, तो भारत में अंग्रेजियत तो रह गई, वो वैसे ही बनी रही, देश चले गए,
क्योंकि यहाँ ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा समाज उस समय तक तैयार कर लिया था जो स्वार्थ पूर्ति के लिए एवं अपने अधिकारों को प्राप्त करने की लिप्सावश कुछ भी कर गुजरने को वे शर्म महसूस नहीं कर रहा। इस तरह के लोग तो अंग्रेजों के साथ भारत से गए नहीं थे और आज भी भारत में मौजूद है। उनका जाल हमारे देश में आज भी बिछा हुआ है और वो जो चाहते हैं वो आज भी होता चला जा रहा है। तो हकीकत ये थी कि अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए क्यों ने इस पूरी चीज को बनाया था और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जिसके जो उत्तराधिकारी थे, इनका नाम लेना आवश्यक नहीं है, हम लोग सभी जानते हैं। और इन्होंने भारत विभाजन को स्वीकार करके तमाम देशभक्तों, क्रांतिकारियों, अमर शहीदों की कुर्बानियों को, उनके नामों को इतिहास के पृष्ठों से मिटा दिया। और ऐसे ही लोगों में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका चित्र उस समय शायद किसी भी पब्लिक बिल्डिंग में या सरकारी बिल्डिंग से वे दिखाई नहीं देता था, क्योंकि नेहरू के शासनकाल में एक समय ऐसा आया कि उनकी फोटो लगाने पर भी सरकारी पाबंदी लगा दी गई थी। और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो चरित्र था वो ह्यूम और डफरिन की कूटनीतिक मंत्रणा से तय हुआ था। अब बहुत सी और महत्वपूर्ण साहित्य हैं, बहुत सी किताबें हैं जो हमें बहुत से इवेंट्स की, बहुत सी घटनाओं की, बहुत सी और बातों की बात के बारे में बताती है, लेकिन शायद हमारे पास अब समय नहीं है। हमने कुछ ज्यादा समय ले लिया है, इसलिए अपनी बात को हम यहाँ खत्म करेंगे। लेकिन दो बातें हम आपसे कहना चाहेंगे कि नेताजी का जो जबरदस्त एक्शन प्रोग्राम था, है ना, और जिस जबरदस्त तरीके से उन्होंने उसे क्रियान्वित किया था, उसमें वो सफल भी हुए। तब ब्रिटिश सरकार के होश जो थे वो पूरी तरह उड़ गए और 1944 में इंग्लैंड से एक सूचना प्राप्त होती है, पढ़ा था, एक सूचना प्राप्त हुई, एक टेलीग्राम आया जिसमें लिखा था कि क्यों ना जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री समझ लिया जाए। और इस संकेत के मिलते ही नेहरू जी ने सरकार की मंशा के अनुसार आईएनए को तो मान्यता देने से इनकार कर ही दिया था। उन्होंने ये भी कह डाला कि अगर बोस जापान की सहायता से भारत पे कभी आक्रमण करते हैं या नजर उठा के देखते हैं तो मैं स्वयं तलवार लेके उनका मुकाबला करूंगा। और इसी संदर्भ में और बहुत से और तथ्य हैं। लॉर्ड डेविल का अचानक बुलाया जाना, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में भेजना और लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा तुरंत भारत के विभाजन को एक्सेप्ट करके भारत में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भारत में थोपा जाना। और इसके अलावा एक श्यामलाल जैन जो नेहरू के टाइपिस्ट थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिनसे श्यामलाल जैन थे और इसके अलावा उन्होंने ये बात बताई कि नेहरू जो थे उन्होंने कुछ चिट्ठियां उसे टाइप कराई थी और उस चिट्ठियों में उन्होंने ये बात इंडिकेट की थी कि सुभाष चंद्र बोस 23 अगस्त 1945 डायरन नामक स्थान पर चले गए थे, मंचूरिया के डायरन नामक स्थान पर चले गए थे और अपने कुछ कुलीग्स के साथ वो अब रशिया चले जाएंगे, है ना, रूसी बॉर्डर की ओर वो बढ़ गए। इसी प्रकार के खबर एलाइड फोर्सेस के जो फौजी इंचार्ज थे जनरल मैकआर्थर, उन्होंने भी अपने टेलीग्राम पे कही माउंटबेटन को दी और उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जो है एक बार फिर बच के निकल गए। और 2 सितंबर 1945 को जो लंदन का एक संडे ऑब्जर्वर था उसने एक दावा किया कि हमारे पास इतने सबूत हैं बताने के लिए नेताजी विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को नहीं मरे हैं। तो बहुत से सवाल उठ सकते हैं और बहुत से सवाल उठे भी, किंतु यहाँ केवल इतना ही कहना काफी होगा कि सत्ता सौंपने का जो चुग्गा ब्रिटिश सरकार ने डाला था वो शायद उस समय की लीडरशिप के लिए उसने उस समय की लीडरशिप को न केवल भारत के विभाजन के लिए तैयार किया बल्कि कुछ ऐसी योजना बनी, माउंटबेटन नेहरू योजना बनी थी, एक समझौता हुआ था जिसके मुताबिक सत्ता सौंपने की सरकारी कागजात 1999 तक प्रकाश में नहीं लाए जाएंगे, इस बात की भी व्यवस्था की गई थी। और निष्कर्ष ये है कि सिर्फ गांधी ही नहीं बल्कि पूरा भारत भी ये नहीं जान पाया कि किन शर्तों पर भारत को आजादी मिली और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात की गई थी। जवाहरलाल नेहरू को किन शर्तों पर प्रधानमंत्री बनाया गया जिसका ऑफर उन्हें 1944 में ही दिया गया, है ना। ये सारे बहुत से स्पेकुलेशन, बहुत सी बातें हैं जो उठी बहुत से। तो इस प्रकार से पूर्ण स्वतंत्रता मिलने के बाद हम देखते हैं कि नेहरू जो है वो एक तरह से पूर्ण स्वतंत्रता 1945 बाद की घटना है
ऐसा लगता है कि जैसे हेलो, हाँ, तो ये लग रहा है कि जैसे नेहरू स्वयं एक दीवार बन के खड़े हैं और इनके जितने भी बोस जो है वो शायद भारत की जनता या भारत के भारत की ओर आने की कोशिश करना भी वो बहुत उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि क्या ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर षड्यंत्र किया गया, उसका परिणाम ये हुआ कि बोस कभी भी देश की जनता से न तो मिल पाए, न ही सत्ता हस्तांतरण के किसी भी फैसले को प्रभावित कर पाने में सफल हो पाए। और 1947 के बाद जिस तरह से बहुत से लोगों की रहस्यात्मक तरीकों से डेथ होती है, जो लोग जरा भी उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप को शक होता है कि उन्हें बोस के जीवित होने का भान, तो तुरंत ही कहीं ना कहीं वो लोग अपनी जमीन जायदाद और अपनी बहुत से ऐसे इवेंट्स हमारे सामने हैं, उदाहरण हमारे सामने, जिनसे पता चलता है कि उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी की गई। तो जो मेन सब्सटेंस इसका है वो ये है कि बोस जो थे उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके मूल में हमें जो आत्मसमर्पण का भाव कहीं भी नजर नहीं आता, और हम उनके पूरे कैरियर में, उनके पूरे पर्सनालिटी में देखते हैं कि कहीं भी उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। अंत तक ब्रिटिश सरकार या किसी के भी हाथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं आए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। Thank you so much, ma'am, for your wonderful lecture. You reveal very much thing that we have to be know about one of our greatest freedom fighter. Now, I would like to invite Dr. Jana if you want to say something. Otherwise, I would call you. Hello, Dr. Jana, are you want to say something? Just give me 1 minute, please. Hello, Dr. Jana. Give me 1 minute. Yes, please. I'm sorry. I just. Rudra, can you hear me? Yeah. If you want to ask some question, please. Yes. Thank you so much, madam. And thank you, Rudra Narayanji, for such a very wonderful introduction. And madam's lecture really very praiseworthy and very meaningful and very informative. What she said, more than 62 minutes in particular this night. Thank you so much, madam, for connecting with us for Netaji's bath sequestrational ceremony observed by Ravenshaw University and National Law University, Kolkata, and Center for ADIVASI Research and Development. I would like to two brief informations in short time, madam, short span of time. First, what kind of rift between Netaji and Gandhiji in during national movement, particularly in 1928 and 1938, in one decade of these particular two dimensions of particular years when Netaji beat Gandhiji's candidate direct in Indian National Congress. Yes. And second, what kind of motivation Netaji had, in particular the sense of time in that particular national movement, the women regiment in that era, such a very eye-opening, wonderful. Even today, government not found suitable women, in particular paramilitary forces, even polices, in other militant academies. But how could Netaji manage, in particular 1930s and 1940s, when INA formed, and it's a special women regiment in that era? I need your answer, madam, because you are so passionately study Netaji and you are closely research on particular Netaji's life journey towards a freedom fighter to a national. So, sir, can I make a request to you, sir, just to very precisely, please repeat your question again, because I couldn't get your question. Madam, I want to know first the rift between Gandhiji and Netaji. Yes.
in Can I 1920. make a reply, sir? Can I make a reply? My reply to your first question is that the personality of Subhash Chandra Bose and the personality of Mahatma Gandhi looks to be, The rift between Gandhiji and Netaji. yes. And second, how Netaji motivated the women, in particular the sense of that time in 1920s and 1930s, to formed a particular women regiment in INF. Yes. See, the point is that as far as Gandhiji is concerned, Netaji, the way Netaji used to think, his thinking was very clear-cut, very precise, and it had no confusion. So he was right from the beginning, he was saying that we have to have a very clear-cut program. We have to learn our lesson from history. We have to learn our lesson from, what happened to countries of Europe in the wake of First World War, how they managed their freedom. And unless and until India follows that path, India will never be able to get what she wants, and that can never be achieved by the methods which Mahatma Gandhi was propagating, the way of compromise, the method of non-violence, the method of passive resistance. He said the Britishers are not going to give up India at any cost. And second, even if they are economically shattered and broken, their hold on India will be further tightened. They will not think of leaving India. They will further hold it more strongly. And, he said that, therefore, understanding the nature of the British, he said that it is useless to expect from them that they will ever give up. So it is better that we make our strategies in such a way. But unfortunately, when he was linked to the political power, in Bengal, when he went to the Provincial Congress Committee as a chief executive officer of Calcutta Corporation, he worked so well. He, as a member of the Relief Committee in Bengal, he worked so well that even the British government was forced to appreciate or to give him public appreciation. And when he was attached to the, to making preparations of Swaraj Party, he did his job so well that C.R. Das was so impressed by him, and he gave him further so many other responsibilities. So we find that in Bengal, Netaji Subhash Chandra Bose was right from the beginning. He was continuously being very successful, and he had a very clear-cut program there. So, but the Indian National Congress, where the leadership of under Gandhi, because Gandhi's, had his own fascination, and there was a big chunk of Indian public which was a follower of Gandhi. So naturally, it was not easy to break the spell of Gandhi, and so Netaji kind of ended up in frustration, I believe, that in 1928-29 he is talking about complete Swaraj, पूर्ण स्वतंत्रता. बंगाल में बहुत सी ऐसी उन्होंने मीटिंग्स की हैं जिनमें उन्होंने कहा कि देश का जो वो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, वो पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, और शायद इसीलिए बार बार सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार, उनको जेल में डाल रही है, क्योंकि ही इज द प्रॉब्लम फॉर दैट. ही इज ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज पीपल अराउंड हिज व्यू पॉइंट. लेकिन ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एनुअल मीट्स होती हैं, उसमें उनकी इस बात को नहीं सुना जाता. इट वाज कोल्ड शोल्डर्ड, सो ही वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड. और उसके बाद जब उन्हें स्ट्रेट पॉलिटिकल पावर मिलती है, और इस बीच में यूरोप जाके वो पूरी तैयारी करते हैं, है ना, और एक्सेस देशों के साथ मिलकर कि किस तरह हम अपने लिए ताकत को जुटाएं. सो इन विच कॉन्टेक्स्ट ही रेजेस द इंडियन रीजन, ही रेजेस द आजाद हिंद गवर्नमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट. और 1939, 38 और 39 में जब उन्हें पॉलिटिकल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है, फिर वही प्रॉब्लम आती है कि उनका जो एजेंडा है और जो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है, जो उसमें जिन लोगों का प्रभाव है, वो उससे पार नहीं पा रहे. He is trying his best. He is being very polite. He is being very respectful to Gandhi. He is being very respectful to the working committee, and he is constantly pleading Gandhi कि भाई आप हमारे लिए एक वर्किंग कमेटी में ऐसा वो कीजिए जिससे हमारी बात को सुना जाए. लेकिन Gandhi, in that sense, was not receptive to Bose's ideas, and therefore, that breach was always there.
And I think this was the basic difference. He was talking about using violence. Gandhi was adamant on the use of non-violence. So, this was a very important aspect because of which both of them were falling apart. तो ये आपका पहला प्रश्न हुआ. दूसरा, may I get on to your next question, please? Okay, ma'am, Dr. Jena is not there. I have seen. I thought she's left the meeting because of some internet trouble. Yeah, I think some connectivity problem is there because I'm having problem in hearing. It gets Yeah, cut in yeah, between. yeah. So, So okay. Thank you, ma'am, for being with us. Now I would like to invite thank you. Dr. Pavan Kumar Bag to go for a formal vote of thanks. Thank you, sir. Thank you so much. Dr. Bag. Thank you so much, Dr. Rudranarayan. So at the outset, let me to take this floor and uh, express a formal vote of thanks. But before that, let me to express my deep sense of gratitude personally to Professor Aruna, who has been really phenomenal when she was talking about this particular session. And let me also take this floor to acknowledge the deep sense of knowledge that Professor Aruna has. Because while I was listening, in fact, we all were listening, we could see that she has not only did her research, but she has also somewhere internalized the basic core principles that has been shared and that has been shared and shown by Netaji. Thank you so much, ma'am, for accepting our invitation. And I must say that you have taken the entire lecture series of Netaji Memorial International Lecture Series to a different level, and I'm sure that the next time the next speaker, when he comes, he will definitely do more justice, because the bar is now increased by your prolific lecture. And I'm also grateful, uh, in a sense, you have unfolded various things which has always been remained as silent and hidden from common people. And I must say that this is high time that we must, not only as a as an individual, but as an institution, we must try and unfold those untold stories, because we all know and we all have been experiencing that Netaji Subhash Chandra Bose is one of the unsung hero of the Indian freedom movement. And probably many of the times we all worship, or we all pray the character that is shown to us, but there are a lot of people who are behind that characters, who build that character. And probably one of such characters is Netaji Subhash Chandra Bose, who has uh, we all know that how history has been written and how history has been silent. But of course, with the people like you who have unfolded, who have tried to bring the reality in one or other form, has the process has begun. And probably this particular forum is also committed to do that sort of activity. And probably by this we can pay the real tribute to that uh, hero. I must also take this forum to say that as we all know that right now our honorable prime minister is on his visit to Japan. And I was just listening to one of his speech couple of hours back, while he was saying Bharat chalo and Bharat se judo. And somewhere I was just trying to connect after listening to your lecture, that whosoever comes, whenever, the footprints will be of Netaji Subhash Chandra Bose. You never forget, you cannot, and you never ignore the basic essence that he has given. And probably we people in India are very much less aware and knowledgeable than the people around the world about Netaji Subhash Chandra Bose. And this is a fact. We have to acknowledge that. So, nevertheless, thank you so much, Professor Aruna ma'am, for accepting our invitation and giving us such an insightful
talk, and I'm sure that we at the organizer level, Ravenshaw University, Indian Institute of Management, National Law University, are very much thankful for your precious time and valuable lecture. We'll continue to seek your support and guidance in the days to come, and I'm sure that you must have also enjoyed by expressing many of the hidden things that you have probably uh, by sharing to participants on such a global platform. We will continue to seek your support and guidance, ma'am, in the days to come. Thank you so much once again for accepting our invitation. We will be looking forward. Thank you so much, ma'am. Okay. Thank you. Thank you so much. Over to Dr. Rudranarayan. Yeah, thank you. The meeting is concluded.